Hello everyone, welcome to OASHUB Daily Current Affairs Discussion. So आज हूँ 17/4/2024 करंट अफेयर डिस्कशन आम डिस्कस करवा जदियो आज लेट पोस्ट करूँ बट आज आई सेड कि इट वुड बी बेटर टू फिनिश ऑफ तो फास्ट करंट अफेयर जदि आम देखा वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन को लेकिन आम जदि डिस्कस करवा कि समरी ऑफ दिस आर्टिकल्स इज दैट now how it would be helpful. So obviously these articles will definitely help you to write the women empowerment wala questions, and apart from that it would be also help you to develop the perspectives with respect to women's and their conditions and what the social aspect is changing accordingly with the society. That will have also the so overall your idea will definitely increase in terms of the, I would say, what that is the sex ratio as well. So let's begin this articles रो कहबा कथा रिसेंटली जदि आमे देखबा के लोकसभा इलेक्शन हवा पे जाउची एंड कर्नाटक रे हमक देखा मछि के ड्रास्टिक पॉलिटिक्स दैट इज व्हाट रिमेन्स द प्राइम एंड द जेंडर रिप्रेजेंटेशन रिमेन्स स्क्यूड. That means हमें देखबा जेंडर रिप्रेजेंटेशन इन द पॉलिटिकल स्फेयर एंड द पॉलिटिक्स स्फेयर रे जदि हम देखबा the state is having 28 two main political parties जो हमें देखबा 48 men and 18 women are, that is हमें कांग्रेस and बीजेपी देइचंती जोटा कि हमें only 8.5%. that means out of जदि हमें देखबा total seats जदि only 8.5% women जदि हमें कहबा कर्नाटक रे. Okay, 6 from the Congress and 2 from the BJP. At least 14 seats are going to be polls on the 26th of April. The total number of candidates जदि हम देखबा 247. Out of these, that is the 8.5% women. National average जदि हम देखबा 8%. That means 8% women are going to take participate in the election according to the election commission data. Kerala 12%, Tamil Nadu 8%, and Uttar Pradesh as well 8%. So overall national average is 8% when it comes to the what candidate those who have filed for the election or in the what election fray, in the fray of election jodi hame discuss kariba. And apart from that, one thing you have to remember, that is the what the national average, that is the what gender ratio jodi hame dekhiba has improved 997 with respect to 100 males. So almost it's like what I would say equal, almost equal jawab pai jauchi. So that means that both, it's a good news that almost is going to be equal. The gender index जदि हम देखबा खास करी प्रधानमंत्री जो हमर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किंबा कन्यादान पात्र कथा नै जो number of schemes from the different state governments and the central government as well that have helped that has obviously, I would say, helped to achieve this sort of target, this sort of good ratio that will obviously lead to the what overall growth and development of the nation and gender wise as well. तो सही भले जदि हमें आगु को देखिबा obviously हमें डिस्कस करिबा कि the women are they are doing pretty hard work. सेबने बहुत हार्ड वर्क करूचंती. Most of the women are in the fray today as the daughter. जो मैंने भी इलेक्शन लड़ुचंती सेबने daughters, wife and daughter-in-laws. Party leaders nominated to this that means हमें कहबा nominate करंती बा leaders animate to continue the family business and daughter dedicates by the male to the family members. सेमन के भीतर ही साधारणतः पैट्रिकल बट आम के आरेना तो एमती ही था कि कौन से गोटे फैमिली मेंबर तांकर गोटे लेट्स से आम के कौन से गोटे एमएलए अछि से चली गले जदि चली गले सिंपल मु कहबी कि तांकर डेथ हे गला तांकर डॉटर मदर से आबिथियो से तांको कर दउसंती. तो बेसिकली हमें देखिबा पॉलिटिकल एम्बिशियस पाई वुमेन्स मान को ठिया करा जाउछि. एमती ना कि वुमेन्स माने ठिया हबो बोली तांको करा जाउछि ना, तो मेल काउंटर पार्ट्स तांकर निजर ए पे हमें कहबा बेनिफिट्स पे हमें कहबा अक्रॉस द कमेंट्स फ्रॉम द मेल काउंटर पार्ट्स तांको देखा. सो दिस इलेक्शन सीरीज ऑफ हमको देखिबा दैट इज अनसेवर्टली रिमार्क्स फ्रॉम द वुमेन्स that is but deemed fit only for the what key chains कि हाँ एमती बहुत सारा रिमार्क्स मध्य देखाउछि कि वुमेन्स माने कहीं इलेक्शन को आसीबो सेमान की चेन रहिबा कथा. तो एमिति कमेंट्स आसे, डोंट वरी से कमेंट्स वगैरह हमको तो डिस्कस करिया नहीं.
बट हाँ जदि आम स्टाटिस्टिक्स को टिके देखा कि 16 17 एंड 18 सो 16 लोकसभा जदि आम देखा 61 वुमेन्स वर देयर when it comes to the 17th Lok Sabha it was 78 so 17th is 78 but it remains to be seen if the 18th Lok Sabha re kon hochi whether it would improve the score or not but the women representation bills 2020 through asla jo 33% reservation diya for the Lok Sabha and the state assemblies से तो एते जल्दी एनफोर्स हबर नहीं बिकज द डिलिमिटेशन हैला पर ही न्यू पॉपुलेशन डेटा आसला पर ही करा जिवो तो आप वेट करे पड़े सो द डेटा इज हियर यू हैव टू रिमेंबर द डेटा that the total candidate in the fray for the women's that is the 8% national average Kerala top the list and apart from that that is the what sex ratio is 997 that was also a key point for you to be remember and from this region that is the 16th Lok Sabha 61 and 17 Lok Sabha 78 that is the data you have to remember and the 23 that is the 2023 women's representation bills ko bas etik keyword you have to remember from this what article so apart from that when it comes to the what that is the what टीवी डिजीज को जेतरा आम देखा सो एथरे आम इंपोर्टेंट किसी डेटाज को देखा तो समस्ते जानते टीवी इज अ बट बैक्टेरिया बॉर्न डिजीज इज अ बट बैक्टेरिया बॉर्न डिजीज जहाँ हम कह ट्यूबरक्लोस बैक्टेरियम ना टीबी रो टाइप्स कौन होता है गोटे थाए तुम टीडीएस जहाँ आम कह टोटल ड्रग्स रेजिस्टेंस टीडीआर टोटल ड्रग्स रेजिस्टेंस XDR extreme drugs resistant and drugs resistant that is the DR drugs resistance total and the extreme तो एमती तुम्हारा extreme and total these are the different sort of TVs हमको देखा जाए तो TB is what that is हमें कहवा it's a bacteria borne disease ना इंडिया रो TB elimination target थिला 2025 before the 2020 30 sustainable development goals पूर्वरु but इंडिया सही टाइम रे जति भी हम देखिबा इंडिया इज द बट वर्ल्ड हाईएस्ट टीबी बर्डन्स ऑन इंडिया एज वेल ध्यान से देखिबा टीबी जति हम देखिबा वर्ल्ड्स रो हाईएस्ट टीबी पेशेंट फाउंड इन इंडिया एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द ट्यूबरकुलोस बैक्टीरिया वी आर हैविंग टारगेट 2025 टू एलिमिनेट द टीबी फ्रॉम द इंडिया ओके ना चैलेंजेस कौन चैलेंजेस हमको देखा पड़ुछि कि बहुत समय हमको एमती देखा जाउछि कि जो ट्यूबरकुलोस आम कह जो डिजीज रोची बा टीबी जो डिजीज रोची कौन प्रोफेशंस एंड द पेशेंट्स रिपोर्टेड द ड्रग्स सर्टेज एडी कौन देखा जाउछि इंडिया रे कि ड्रग्स सर्टेज बहुत देखा जाउछि पास्ट 2 मंथ्स हम हमको डॉक्टर्स मन को देखा नहीं स्टाफ्स देखा नहीं केयर गिवर्स मन को देखा नहीं स्क्रैम्बलिंग टू अस इज द ड्रग्स सेंसिटिव्स एंड द टीबी मेडिसिन तो खास करी लास्ट 2 मास अब अथर कया कथा विश्वजीत धार द फॉर्मर प्रोफेसर ऑफ जेएनयू से कहवा कथा लास्ट 2 मंथ्स अब कि जो टीवी पाई जो ड्रग्स वगैरह दरकार ना से कोठी ना कोठी बहुत सर्टेज होची दैट इज व्हाई आमे कहबे जो ट्रीटमेंट तो रिलेटेड ट्रीटमेंट ठीक से ही पारु नहीं एंड जो टीबी जदि आमे कहबा साधारणतः टीबी पाई प्रोक्यूरमेंट जो ड्रग्स प्रोक्यूरमेंट हेता एटा सेंट्रल गवर्नमेंट करि थांती टीबी एलिमिनेशन नेशनल एलिमिनेशन पाई बा टीबी वुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द नेशनली बट सडनली देखा होची कि यूनियन गवर्नमेंट जदि आमे कहबा जो टीबी यूनियन गवर्नमेंट कौन करती ना ताकू प्रिक्योर कला परे स्टेट रो वेयर हाउसेस को पठाते एंड स्टेट वेयर हाउस रु सेटा कौन करा जाए डिस्ट्रीब्यूट करा जाए बट जेहेतु इरेगुलेटरीज आसी जाउची सो दैट प्रोक्योरमेंट ठीक से ही पारुनी स्टेट गवर्नमेंट ठीक से पाई पारु नहीं तेणुकरी ऑन द मास 18 रे आमे कहबा शॉर्टेज बहुत देखा गला द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर्स टोल्ड द स्टेट्स टू प्रोक्योर द ड्रग्स लोकली से मन करी लोकल प्रोक्योर कर दियो एंड सो दैट लोकली 3 मंथ्स पाई केले 2 to 3 मंथ्स पाई तमने लोकली प्रोक्योर करिक ताको पेशेंट को दवा चेष्टा करो देन वी विल सी व्हाट विल हैपेंस इन द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन द स्टेट्स वेर also given the option to what reimbursed those who bought the medicine from their own जो माने निजो हाथरू पैसा खर्च करी आनछंती तांकु से पैसाटा पुणी रिएम्बर्स्ड करा जो बा वापस दिया जो से मध्य ऑप्शन दिया जाइछि तो जहाँ भी हो दैट इज हाव द डिले इन द व्हाट इंस्ट्रक्शन जेहेतु इंस्ट्रक्शन दबारे लेट होती ताद्वारा बहुत सारा लोगों को ड्रग्स मिल पारे नहीं बहुत जनकर ड्रग्स आम कह टीवी सेंटर ड्रग्स नहीं जो पेसेंट मैंने अच्छी से ड्रग्स पाई पारु ना कौटी गोटे दिन पर लोक ड्रग्स पाँच कौटी पाई पारु ना तो कौटी ना कौटी जो ट्रिटमेंट अवहेला देखा मिलूँ द्वारा कौन हम ना ड्रग्स रेजिस्टेंस बढ़ी जहाँ हम कहे मल्टीपल ड्रग्स रेजिस्टेंट टीबी जहाँ मुझे कहूँ मल्टीपल ड्रग्स रेजिस्टेंट MDR हो देन से XDR हो देन से TDR हो
ओके तो एमती डिफरेंट डिफरेंस मल्टी हो देन एक्सट्रीम हो टोटाल हो ड्रग्स रेजिस्टेंस ये हूँ टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस तो से आम जो टार्गेट रखीचे कौटी ना कौटी से टार्गेट अचीव न हो पारे बाय 2025 तेणु जो बॉटलनेक देखा जाए टीवी को टीवी रो जो एलिमिनेशन टार्गेट को अचीव करने या आम के जल्दी इमिडिएटली तार किसी बॉटल को तो जो बॉटल नेक्स अच्छी रिमूव करा पड़ो दैट इज द आम कह व्हाट sorry, this articles is not written by Biswajit Dhar. Sorry, pardon me. Okay, so ये that one. Now we will comes to the main articles that is the gig economy of press Biswajit Dhar कहते gig economy. प्रथम कथा gig economy कौन gig economy अर्थात contractual worker simple आम कहबा contractual worker not permanent worker contract देइदेबा आमे लाइक ऑन एकेडमी बाइजू ये मैंने कौन साधारणतः कॉन्ट्राक्ट बेस आम कह जेते तुम इलेक्ट्रोनिक्स परफॉर्म इवन तुम देख जेते डेलीवरी बॉय कथा नहीं दीज आर द गिग वर्कर बट गिग वर्कर रो गोटे बेनिफिट कौन थाए से निज अनुसार टाइम रे आसे निज टाइम सेट करती केते समय करिवो मन इच्छा तांकर से करिवे कि बाध्यता न थाए कंपनी रो से केते समय जॉब करिवो कोठी करिवो तो ये थाए ओके सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजोरिटी से घरे बसी काम कर से मतलब निज ऑफिस रे जाइकी कर दैट इज द बेनिफिट ऑफ द गीग इकोनॉमी आम गीग वर्कर आम कहवा तो प्रोफेसर ये जदि कहबा विश्वजीत धार कहवा कथा कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड होची ताको फ्लूट्स करा जाउची गीग इकोनॉमी रे ना जदि आम कहबा इंडिया रो जदि आम वर्कफोर्स कथा कहबा दैट इज ग्रोइंग एंड दैट वुड बी 23 मिलियंस आम कहबा के एंड ऑफ द डेकेड्स सो नीति आयोग कहवा कथा कि हमर जो वर्क आम कहबा जो दैट इज व्हाट वर्कफोर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग डे आफ्टर डे आफ्टर वर्कफोर्स बढ़ी बढ़ी जाऊँगी तेणुक आमर जेहेतु वर्कफोर्स बढ़ी बढ़ी जाऊँगी तो आमर कौन होते जो घिक वर्कर मन अच्छे ये आईएलओ जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रो जो गाइडलाइंस अच्छी फॉलो करूना द्वारा आमको कौन हो लॉस होता देखा आगक सो दैट रैपिड एक्सपांशन हमको देखा मिलूँ तो एमती जमती इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन डिसेंट वर्क कथा कहे जो डिसेंट वर्क एम मिलूना बा आमे देखा मिल तो आमको जो यंग पॉपुलेशन आम जो वर्कफोर्स आसुचंती it is necessary to examine their working conditions so that the appropriate policy intervention and formulate तो ऑथर कहा कथा जो हमारे यंग पीपल्स दोज आर कमिंग टू द वर्कफोर्स बा वर्क को आसुचंती डिसेंट वर्क दे नीड ए डिसेंट वर्क ताको पे डिसेंट वर्क दरकार तो ओब्वियसली से कहउचंती आमर गिग इकोनॉमी कहूँ ब्लूम करुच्ची कौन पे बिकज ऑफ द नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स केमती जोमाटो कथा नहीं स्विगी कथा नहीं अनएकाडेमी कथा नहीं दीज आर द कंपनीज दैट इज द फिनटेक कंपनी जदि आम कह खास करके मु कहबी है ना फिनटेक कंपनीज दे स्पेशली द हाईली गिग वर्क सब हाईएस्ट होची तुम फिनटेक कंपनी रे कोठी हम देखा फिनटेक कंपनी दैट इज द न्यू कंपनीज सो दैट जदि आम कह एमानकर कौन वर्किंग आवर उपर से क्वेश्चन उठाउछंती किए वर्क करुँच ये जो आईएलओ कथा कह कथा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहे कि सप्ताह को केते करिया कथा 48 आवर्स रो घंटा जने काम करिया कथा किंतु जदि आम गिग लेबर कथा देखा गिग वर्कर कथा देखा से बहुत समय काम कर 12 घंटा 13 घंटा 14 घंटा समटाइम्स एमती काम करुँच किंतु जोटा कि मु डिस्कस करूँ कि आईएलओ अनुसार से कौन हो 48 आवर्स कहते हवा दरकार दैट इज द व्हाट वीकली हवा दरकार किंतु एमने तुम देख एते मतलब जो मैंने खास कर कहवा जो मैंने आसुचंती जो मैंने ये ड्राइवर बेस कथा नहीं तो जो मैंने एज हो जो मन एज अधिक हो कि 40 ରୁ 60 से यही कम अधिक करें आफेक्टेड हम तेणुक कौटी ना कौटी गोटे वर्किंग आवर को आम कहवा सेट करा पड़ो ये देखो 60% ऑफ द वर्कर्स ओवर 12 आवर करुँच 30% करुँच तो ये जो डेटा दिखाई एत समय घंटा घंटा धरी बाइक चलैबा काम करवा सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वर्ड टॉपेस्ट आम वर्क कहीपर 83% 10 आवर्स अधिक करुँच 60% 12 आवर्स अधिक हो 30% जदि आम देखा रिपोर्टेडली 14 आवर तो एतिक समय जड़े जो मानकर आम किंतु करिया कथा केते 48 घंटा तो जो लोक मैंने आम कहवा जो मैंने 40 ରୁ 60 वर्ष भितर एज अच्छी से काम करें ना एत समय Okay, 70% of the drivers reportedly they are earning what not adequate meet their expense. तो ये जो लोक मैंने ये एज रू लोक मैंने काम करें ना तेणु करके आम देखा दैट इज द पीपल एसोसिएशन इन द ग्रासरूट एक्शन एंड द मूवमेंट दैट इज बट पाइगाम यूनिवर्सिटी पेंसिल्वेनिया इंडिया दैट इज बट फेडरेशन दैट इज ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स कथा कहते कि जो मैंने आमर खास करके ये जो ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर कहते ना
एमाने करे देखियो 5000 ड्राइवर्स एंड द डेवलप पर्सन 8 सिटीज रे जो मैंने काम करुँच कोठी ना कोठी आईएलओ नॉर्म्स अनुसार काम करूना फेयर इनकम पाई पारुना सिक्योरिटी नाई प्रोटेक्शन नाई किछि नाई ये जो मैंने स्विगी बॉयफाई आंकर किछि प्रोटेक्शन अच्छी कि जॉब रो किछि वैलिडिटी अच्छी कि नाई ना फेयर इनकम पाउछंती ना जॉब सिक्योरिटी अच्छी ना प्रोटेक्शन अच्छी ना वर्किंग प्लेस भी बहुत भल अच्छी तो ये जो आम देखा दैट इज द तेणु आ द्वारा कौन हो कि एफिशिएंसी कमी कमी जाऊँगी तो ऑथर कह कथा विश्वजित धार कह कथा कि द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्किंग आवर एंड प्रोडक्टिविटी हैज ग्रेटर सिग्निफिकेंस बट फॉर द इंडिया इन द व्यू ऑफ बट पाइगाम तो ये पाइगाम कह कथा कि जदि कौन लोक 14 घंटा 15 घंटा काम कर वर्किंग एफिशिएंसी तार कमिज सो दैट इज व्हाट इनवॉल्व्स रिलेशन तेणु करके जदि आम वर्किंग जदि आम देखा जो मैंने जो प्रोडक्टिविटी अधिक ना से वर्किंग आवर कम तो बस करके आम फास्ट मतलब से कहते कि जो डेभलप्ड नेशन सब रही सेठी जो वर्कर मैंने अच्छा से कम समय काम करती प्रोडक्टिविटी अधिक ओके आमर ये कौन हो प्रोडक्टिविटी कमी जाऊँगी तो बेटर आम कौन करवा द्वारा कौन डेमोग्राफिक डिविडेंड अचीव हो ना तेणुक डेमोग्राफिक डिविडेंड आमको कौन वर्किंग कंडीशन करा पड़ो एंड आम डिस्कस करवा कि जो कंडीशन रही से कंडीशन को आम केमती स्टैंडर्ड ऑफ आईएलओ को केमती आम अप्लाई करि परिबा तापे गोटे फ्रेमवर्क गोटे फ्लेक्सिबल मार्केटिंग करा जाऊ तो आम सेटा को मध्य से डिस्कस करने कहते तो दिस इज ऑल अबाउट आम कहबा ये पूरा आम कहबा गोटे कंडीशन दिया जाऊ कि गोटे भल कंडीशन से वर्किंग दि जाऊ अदरवाइज इट वुड बी डिफिकल्ट आम कहला कि मेजोरिटी ऑफ द वर्कर्स काम करें नहीं जो मैंने 40 ରୁ 70 वर्ष भितर अच्छी 60 वर्ष तो ये पूरा आमर एडिटोरियल डिस्कशन आज डिस्कस कले सो विथ दिस आई विल एंड द सेशन थैंक यू एवरीवन।